Good morning. 20th of September 10:45 a.m. in the UK जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस वीडियो में I will be discussing briefly about FOMC meeting और crypto market या Bitcoin specifically किस तरीके से FOMC meeting के around behave करेगा, expectations क्या हैं। फिर मैं आपके साथ एक और रीज़न शेयर करूंगी कि why is Bitcoin pumping, and lastly और जो मेरा main focus है, जो prime focus of this video today is Injective Protocol. Injective Protocol is a very strong DeFi project. मैं Injective Protocol के fundamentals में ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाऊँगी. I would rather look into much more detailed technical analysis and on-chain analysis of Injective Protocol. आपके साथ में trade setup share करूँगी and I'll tell you why I think Injective Protocol कि अगर हम लोग आज एक ट्रेड ओपन करते हैं, be it futures or be it spot, it's going to give us some decent profits. But before we get started, as always, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हो मेरे YouTube चैनल के ऊपर, so very welcome. मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल्स ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ क्रिप्टो करेंसी मार्केट और न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर या रिव्यूइंग न्यू प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हिडन जेम्स, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो आप लोगों को यूट्यूब ज़रूर नोटिफाई करें. बाय द वे मैं मंडे टू फ्राइडे एवरी सिंगल डे नई वीडियो अपलोड करती हूँ, एटलीस्ट वंस अ डे, समटाइम्स ट्वाइस अ डे. डू लीव मी अ कमेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग योर कमेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज यानी कि 20 सितंबर को FOMC की मीटिंग है जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि जेरोम पाउल, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो स्क्रीन पे, is he going to increase the interest rate or not? 99%, जैसे मैं पीछे काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग पे, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे और अपनी काफ़ी सारी वीडियोस पे बता चुकी हूँ कि 99% प्रोबेबिलिटी इस बात की है, और मे बी 98%. आई थिंक 1% आज ड्रॉप हुई, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, but I'm not too bothered to go and have a look because we know that आज interest rate नहीं बढ़ेगा, not for the month of September, and there is a very increasing probability कि अब कोई interest rate hike नहीं होगा, यानी कि अब कोई interest rate नहीं बढ़ेगा. BlackRock की एक काफ़ी senior personnel है, she had claimed कि there is no need for interest rate hike, and I'm pretty sure कि she is much bigger than Jerome Powell or Federal Reserve, and I'm pretty sure those two talk to each other every single day because BlackRock is BlackRock. Anyways, so there is no need to increase any interest rate. इस वक्त जो हम लोग बिटकॉइन की मार्केट देख रहे हैं, I can see a calm before the storm for in a good way. इससे पहले कि फेड अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन रिलीज करेगा, बिटकॉइन is moderating its recent advances और it's standing just above $27,000 और Ethereum ने करेक्शन की है around $1630. As I said, as per analyst, until this FOMC meeting happens, which is 2 p.m. ET time zone और 7 p.m. BST यानी कि British summer time, आज 20 सितंबर को we're going to see a bit calmer market. मैंने अपने ग्रुप में 2 लॉन्ग्स ओपन करवाई हैं, बिटकॉइन एंड लिंक. तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से हो, नॉट द प्रीमियम वन, फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर माई सिग्नल्स आर ऑल फ्री फॉर यू गाइज टू सी. एनीवेज, इफ यू हैव ओपन 2 longs, तो please do get glued to the screens because things can change. According to SME Fed's watch tool, consensus is that the Fed wouldn't touch interest rate hike. There's a 99% chance, और इसकी prediction will be the main focus. हम लोग, as I said, हम लोग और कोई interest rate hike नहीं देखेंगे for the remainder of this year. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि फेड जो है वो अपने एंड ऑफ रेजिंग साइकिल तक पहुंच चुकी है. दे हैव पुट इन्फ्लेशन अंडर देयर कंट्रोल. लेकिन जेरोम हमेशा यही कहता है कि दे आर डेटा ड्रिवन और दे वुड डिसाइड एज पर द डेटा विच कैन मेक देम हॉकिश. अगर हम लोग फेड को हॉकिश, यानी कि हॉकिश का मतलब ये कि वो ये कहेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक पॉसिबल है या इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं है या इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी या वी विल सी एज द डेटा कम्स, अगर वो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट्स देता है तो दैट इज कॉल्ड अ हॉकिश स्टेटमेंट, और हम लोग बिटकॉइन को टैंक होता देखेंगे. बाय द वे, मैं FOMC मीटिंग को लाइव स्ट्रीम पे कवर करूंगी ऑन माई टिकटॉक एंड ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्रॉम 6:30 PM UK टाइम टुडे 20th of September. तो अगर आप लोगों ने मेरे टिकटॉक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फॉलो नहीं करते, तो डू जॉइन मी देयर. The link will be in the description box.
coming back to Jerome, as per economists, the country is going to face a dangerous consequence if he continues to increase interest rate hike, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, as per economists, because their labor market is getting distressed. जहाँ पे Target और उनके बड़े retail giants, US के बड़े retail giants are actually closing down their retail stores. On the other side, Amazon is opening up its warehouses across the United States. So it clearly shows कि inflation नीचे आ रही है because उनकी जो labor market है that is getting weaker. So as per economists, they don't want to further distress the labor market. Expect volatility. Looking at Bitcoin's 4-hour chart, it looks bullish. As I said, मैं तुम लोगों को कल बताया था golden cross बना था और यहाँ पे golden cross बना था जिसके बाद हम लोगों ने, and I was constantly updating you on Telegram. अगर आप लोग मेरे साथ Telegram पे connected हो, so I was constantly updating you about this golden cross forming. हम लोग यहाँ पर थे जब मैंने कहा थी golden cross बनेगा, और ये golden cross बनेगा 50 MA crossing over 200 MA and 20 MA crossing over 200 EMA. So ये golden crosses जब बने हैं तो we had seen this price upward. लेकिन I'm not expecting the price to go anything higher than 3 or 5%, given, again, very importantly, nothing higher than this, nothing higher than maybe 3, should stay around 27,661 से लेके the most हम लोग इसको देख लेंगे is about 28,389. Not expecting anything higher than that. However, be very very careful. अगर Jerome किसी point पे ये कहता है कि they are data driven and inflation is still sticky and we would see if there is a need for another interest rate hike, so please be very very careful. We would not see this 27,700 और हम लोग price को tank होता देखेंगे. This is a strong support for now, 26,890 for Bitcoin. My MAs are showing me very good picture because 20 MA is still up, is still above than 200 EMA, and 50 MA is way above 200 MA. So I'm very happy with my MAs. This is usually called naked trading. जब आप सिर्फ और सिर्फ MAs को या maybe not even MAs को भी आप नहीं follow करो, then you just do naked trading. But anyways, I don't want to complicate this chart or this technical analysis. Pretty simple, pretty obvious. That's what I'm expecting. Volatility and uptrend. However, 27,670 का जो target है will be crucial. At filming time, Bitcoin की जो market cap है, it has neared 530 billion US dollars. और इसकी dominance is above the all, standing strong at 49.2% on CMC. On to the other reason for Bitcoin jumping. Bitcoin Adoption Fund launched by Japan's 500 billion AUM or asset under management Nomura Bank, I'm not exactly sure how to pronounce it, but Nomura, a Japanese financial giant जिसके पास 500 billion US dollars से ज़्यादा के AUM or assets under management है, they are now targeting institutional investors who may be interested in cryptocurrencies. और ये जो move किया है Nomura, Japanese financial giant ने, उसका ये move आया है after a number of Wall Street giants, they have filed for launching a spot Bitcoin ETF earlier this year, and I said there are 9 in a queue for now, or most of them are 75% sure that SEC will approve their Bitcoin spot ETFs, including, and the top of the list is none other than BlackRock and Grayscale. On to Injective Protocol. That's their sneak peek. मैं इस खबर में कोई ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. I just want to teach you how to look into fundamentals and the news. So आप इनके Twitter के, let me zoom in for you. Go to Injective Protocol's Twitter account. That's their handle at Injective_, the fastest L1 blockchain for finance, backed by Binance, Pantera, and Mark Cuban. Very very strong DeFi project, Injective Protocol. उन्होंने ये आज 6:50 AM पे ये अपनी खबर रिलीज की है. They have not given much details, but it's something to do with their .inj domain coming up. So you can actually purchase a .inj domain. Now, for obvious reasons, this news leads me to Injective Protocol का technical analysis or on-chain analysis, and I want to see shall I be buying Injective Protocol on spot, and or shall I be opening a futures trade on Injective Protocol जो कि I would say would run across the weeks. So that's the daily chart for Injective Protocol.
I can see it bullish with momentum indicators such as MACD and RSI pointing to a growing momentum. MACD और RSI are momentum indicators जो आपको ये बताते हैं कि उस asset का, उस financial asset का momentum build हो रहा है. I can see Injective Protocol rising up to 10% to a weekly FVG or fair gap value because there are fair gap values जो मैं भी आपको बताती हूँ. And I think it can go as high as $8.273 US, filling the inefficiency before a potential pullback. though 8.273 तक जाके इसकी price नीचे आएगी. So between now 7.423 से लेके 8.273 तक we have two choices, either to buy at spot to get a 10% profit, or हम लोग अपनी futures trade भी खोल सकते हैं to capitalize on this profit. A break and close above the CE or consequential encroachment at 8.407 would confirm an uptrend or a pullback because हम लोग 8.90 के ऊपर hurdle देखेंगे. I'm going to explain you everything right on the charts now. So 11 September को around this time we saw a huge dip in Injective Protocol at this level. जहाँ से at 6.601 level जहाँ से price jump की थी from its major support level जहाँ पे buyers आए थे. RSI is showing a bullish outlook. मैं भी इसको भी डिटेल में तुम्हारे से डिस्कस करती हूँ. I would say Injective Protocol has a room to go up as 10% because of its FVG or fair gap value at 8.273. Now what I mean by that is, so ये जो आप यहाँ पे बार देख रहे हो, यहाँ पर एक ये पूरा gap बना हुआ है from this point till this point जहाँ पे this gap needs to be filled, and that's called fair gap value. इस gap value को INJ would come to fill this gap given its fundamentals, given its latest news in the market. FVG जो है, why is FVG important? FVG or fair value gap is important because it actually works as a magnet for the asset prices. ये जो gap है, it's basically an inefficiency जो कि needs to be filled by the asset, which means कि injective price will rise to fill this inefficiency within the lower boundary of the FVG, serving as the take profit level for longs. तो basically लोग यहाँ से अपनी long open करेंगे at this level, maybe at this level, और यहाँ तक अपनी price लेकर जाएंगे to open the long, और फिर यहाँ से price profit taking होगी and price will dip. A break and close above the consequential encroachment, that is CE, would be at 8.40, which would be around this level. So let's say if we have to open a long position, I would enter somewhere here. I will enter somewhere here, maybe at this level 7.339 or maybe at 7.360 में मैं enter करूँगी, and I'll take my take profit levels all the way up to 8.40 levels. और मैं इतना precisely इंतज़ार नहीं करूँगी 8.446 तक जाने का, जहाँ तक ये FVG या CME gap बना हुआ है. I would rather exit around somewhere around at this level जहाँ पे हम लोगों को ये पीछे मिली थी एक wick जहाँ से price reject हो गई थी, which is around 8.16. और इस पे भी, इस trade setup पे भी मैं अच्छा खासा 10.60% profit बना रही हूँ. मैं सिर्फ 20x से अपनी long position open करती हूँ, और मेरी जो given मैं आपको ये exactly नहीं बताऊंगी कि आपकी trade position कितनी होनी चाहिए, anywhere from $500 to $5,000, totally depend on your own crypto portfolio. As a rule of thumb, कभी भी अपने portfolio को 2 से 5% से ज़्यादा नहीं किसी भी trades में डाला करो. So I will enter at 7.360 level. I hope you can see it. Let me zoom in for you more. I will enter at 7.36 level, and I will go all the way up to 8.13 level. और मेरा stop loss should be around somewhere here. मेरा stop loss होगा around 6.7, 6.685k. और this will give me roughly 1:1 का ratio. That will be my trade setup for तुम लोग screenshot ले लो चाहो तो. This will be my trade setup for Injective Protocol. These days I'm not scalping or intraday trading. मैं ज़्यादा अपनी, अगर मैंने कोई 2-3 trades खोली भी वो weekly हैं, so this is one of the जहाँ मैं बहुत confidently Injective Protocol की long खोलूँ. Again, this is what I will be doing. You don't have to necessarily follow me. इस trade setup को तुम लोग अपने demo accounts पे खोल लो, paper trading कर लो इस trade setup के साथ, just to see, just to gain confidence and just to learn कि futures trading होती कैसे है. So my confidence comes from this RSI, क्योंकि RSI is heading north, suggesting कि एक momentum मजीद बढ़ता रहे. और अगर मैं RSI को collab करूँ या pair करूँ with awesome oscillator जो तुम लोग के नीचे देख रहे हो,
तो on a daily chart इसका जो हिस्टोग्राम है it's gaining momentum. हम लोग green, आप तुम histogram यहाँ पर देख सकते हो. Let me zoom in for you. You can see the green histogram forming there. So I'm basically pairing RSI and awesome oscillator here to open my long position. Very quickly I'll look into on-chain क्योंकि मैं हमेशा technicals को और on-chain को ज़रूर pair करती हूँ जब मैं इतनी लंबी long hold रही होती हूँ. अगर मैं scalping कर रही होती हूँ so I'm not too bothered. I can even do naked trading. लेकिन if I am going for long trades, if I'm opening this long position for a longer time period, जैसे कि मैं Injective Protocol के साथ करूँगी, onto on-chain analysis, at the current price 92.14% of your addresses जो INJ hold कर रहे हैं, they are sitting on unrealized profits while only 2.50% are sitting on the unrealized losses. Meanwhile 5.36% are breaking even. So that's pretty much it from today. As always, if you find this video informative and educational, throw me a heart in the comment section. Let me know what you think. Suggest me कि मैं और अपना जो content है वो किस तरीके से improve करूँ और किस subject पे और किन assets पे तुम लोग videos देखना चाहते हो. What do you prefer? Trade setups तुम लोग देखना चाहते हो, detailed TS देखना चाहते हो, project reviews देखना चाहते हो, hidden gems देखना चाहते हो. Just suggest me in the comment section. As always, have a lovely day ahead and I'll see you tomorrow with another exciting and informative video.